Assalamu alaikum everyone. My name is Sanam Irfan and I'm from 5th semester Electrical Engineering Department. So today our objective is to perform this lab number 8, which is about the modulation and demodulation of signals using MATLAB. So first of all, we have to create a plot and we have to create a signal and we have to plot it in both time and frequency domain. And this signal should be two-tone message signal. This means कि हमारा जो signal है, it should have two frequencies जो कि हैं 300 Hz and 600 Hz. So you can also call it as a composite signal because it will be having two frequencies. Secondly, and for this we will be using this simple technique. Second, we have to create and plot similarly both in time and frequency domain the carrier signal with the amplitude 10 divided modulation index. Okay, so modulation index is basically the ratio of the your amplitude of your information signal, which is your original signal, divided by your amplitude of your carrier signal. So this is basically modulation index, और अभी हम आगे कोड में भी इसको यूज करेंगे. With the frequency of, okay, तो जो आपका carrier signal है, it will be having a frequency of 10 kilohertz and sampling frequency of 80 kilohertz. Now we have to generate a time vector having a duration of 0.01 second. So we will be using this instructions in our code and फिर हम उसी तरह accordingly इसको करते जाएंगे. तो अब इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट है यहाँ पर m से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपनी मॉड्यूलेशन इंडेक्स को. देन योर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर कैरियर सिग्नल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय fc, that is 10 kilo, and then fs is your sampling frequency which is 80 kilo, and your time duration time vector, that is this with a step of 1 by fs. And we will create our carrier signal by using this command. So this is our composite signal with the frequencies of 600 Hz and 300 Hz. This is our carrier signal. Then we will modulate our signal. यहाँ पर जो third question is में they're asking us to modulate this signal, and we will modulate the signal by using a function of MATLAB which is known as AMmod. So in this specific lab we are using there are different techniques in order to modulate your signal. So we will be using AM which is amplitude modulation. So for that, you will be using this command ammod, and these are the some of the arguments that we will be using. S is your signal, fc is your frequency of your carrier signal, fs is your sampling frequency, 0 is basically the offset value, and ac is the amplitude of your carrier signal. देन ऑब्वियसली हमारे पास जो मॉड्यूलेशन होती है जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं, एंड इट इज योर चॉइस if you want to have a modulated signal with a carrier or with suppressed carrier, which means no carrier. So आपकी मर्जी है कि आपको आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें कैरियर आप साथ भेजेंगे कि नहीं. एंड ऑब्वियसली अगर आप इसको आपके जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वी ऑल नो दैट उसमें हम लोगों को ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन टेक्निक जो मॉडर्न्स में होती है इसको इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो हम लोग इसी तरह एक मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग एम मॉड, एंड इसी तरह फिर उसको टाइम और फ्रिक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करेंगे, एंड देन उसके बाद हम इसको डीमॉड भी करेंगे. सो हम लोग अब अपने कोड की तरफ जाते हैं. सबसे पहले क्लोज ऑल, क्लियर ऑल and CLC. Okay, so I will be taking modulation index equal to 1. You can take 0.5 जिस तरह लैब में बताया हुआ है, or any other index of your choice. Sampling frequency is 10E3, and then we have fs
sorry, carrier frequency is 10 kilo and fs is 80 kilo. Okay, then we have our time vector, which has a range of 0, colon 0.01 or 0.02 and with colon 1 by fs. Okay, so this is our time vector from 0 to 0.02 seconds with step of 1 by fs. Now I will be using this L is equal to size T and L1 is equal to L and 1 comma 2. So basically what this will do is that I am basically getting the size of the time vector, this time vector, and I will be using these dimensions in my upcoming part of the code. जब मैं frequencies को use कर रही होंगी या frequencies को plot करूँगी, I will be using this. Okay, so the amplitude of my carrier signal is 0, and now coming towards the original signal, the composite signal, I will store it in S, and it will be having an amplitude of 10, then multiplied with sine 2 steric pi steric 300 steric t plus I'll copy this and paste it here, and it will be 600. Okay, so it is 10 steric sine 2 pi 300t plus 10 steric sine 2 pi 600t. Good. Now I will plot the original signal, subplot 3, 2, 1, and plot t versus s, which is my original signal. And you can also add any labels, x label time in seconds, or y label amplitude in volts, and I will not do that. I will only add the legend, which is the original signal. Okay, so x label or y label आप खुद से डाल सकते हैं. Okay, now our original signal has been created. Now we will move towards the carrier signal. So for that, we will जिस तरह लैब में आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, c is equal to 10 divided by m and steric sine 2 steric pi steric your carrier frequency steric t. Okay, subplot 3, 2, 2 and plot it like you did before. Then obviously you can add labels to this plotting as well. I will only add the legend, which is carrier signal. Okay जी. Now after this, अब हम करेंगे modulation and demodulation. तो उसके लिए we will be using the MATLAB's function, which is ammod, as I've told before. So I will be taking ym as the variable, and this is the function ammod with the arguments. Okay, it has several arguments. Number one is your signal.
original signal. Then you have your cutoff frequency, sorry, the carrier frequency, FS, which is your sample frequency, then the offset voltage, and then the amplitude of your signal. और हमने इन सबको already specify कर दिया हुआ. Okay, so I will be plotting this. This will be my modulated signal, and 3 comma 2 comma 3 Lord E comma ym. Okay, after this, legend, this is my amplitude modulated signal. Okay, so अच्छा, normal communication में when you're communicating through any telephone or through any communication means, so उसमें ये होता है कि basically आप लोगों की जो communication होती है उसको बैंड लिमिट किया जाता है, यानी कि उस एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज में बात या कम्युनिकेशन हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट लोगों की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो डिफरेंट होती हैं. तो हम लोगों को अगर हम कोई कम्युनिकेशन करें कुछ भी, तो उसमें अगर हम लोगों को जो है वो नॉइज या डिस्टॉर्शन का केस हो या कुछ इस तरह का हो, तो उसको वो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी फ्रिक्वेंसीज को बैंड लिमिट कर देते हैं कि कोई भी इससे, ये मेरा हायर बैंड है, ये मेरा लोअर बैंड है, इससे आगे पीछे जो है मुझे कोई फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी. एंड उस हिसाब से मैं अपने सिस्टम को जो है वो बनाऊंगा, और मेरा जो फ्रिक्वेंसी है वो इस रेंज में जाएंगी. तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं फॉर इन दिस स्पेसिफिक कोड, हालांकि लैब में ये इंस्ट्रक्टेड नहीं है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसमें हमारी जो ऑलरेडी जो है वो लिमिटेड है. हमें पता है कि हमारा अपर बैंड जो है 600 हर्ट्ज का और जो लोअर बैंड है वो 300 हर्ट्ज का, तो हमारी जो है वो ऑलरेडी बैंड लिमिटेड है. लेकिन जो इन रियल केसेस होते हैं उनमें हमारे पास नॉइज का खतरा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास ये तो नहीं है कि आपको तो नहीं पता कि आपका जो है वो ये इसकी जो ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है यहाँ तक जाएगी, इसकी लोएस्ट यहाँ तक जाएगी. तो उसके लिए हम जो है वो यहाँ पर बटरवर्थ का फिल्टर यूज करेंगे, और इसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, इट इज ओके. अब ऑब्वियसली यू मॉड्यूलेटेड योर सिग्नल, तो उसको डीमॉड्यूलेट भी करना है, तो उसके लिए हम करेंगे z इज इक्वल टू ए एम डी मॉड. नाउ योर मॉड्यूलेटेड सिग्नल वाई एम कॉमा एफ सी एफ एस 0 ए सी कॉमा नम डेन. ओके, सो हमारा जो सिग्नल था हमने उसको जनरेट किया, कॉम्पोजिट सिग्नल को जनरेट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने उसको मॉड्यूलेट कर लिया, उसको फिल्टर लगा दिया, डीमॉड्यूलेट कर लिया. नाउ मेरा जो अ, अभी तक का कोड है हम उसको रन करके चेकआउट करते हैं.
Okay, so this is my carrier signal, this is my composite signal, this is my carrier signal, this is my modulated signal, and this is my demodulated signal. But हाउ कैन वी बी श्योर कि हमारा जो सिग्नल है वो ये और ये सिग्नल सेम है? ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली श्योर होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों सिग्नल्स को कंपेयर करेंगे, और उसके कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे, हम उनको प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए मैं कंपैरिजन के लिए सब प्लॉट 3,2,5 एंड प्लॉट, मैं इन दोनों को एक ही उसमें प्लॉट करूंगी ताकि मेरे पास जो है वो, अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनती हैं, दिस मीन्स कि ये लोग ये बिल्कुल सेम है, हमारा सिग्नल है बिल्कुल ठीक डीमोड्यूलेट हुआ है और इसमें कोई नॉइज कुछ भी नहीं था। ओके, आफ्टर कंपैरिजन अब कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में करते हैं, ये जो हम कर रहे हैं हम टाइम डोमेन में कर रहे हैं। एज यू कैन सी हियर, ये बिल्कुल हमारे पास जो है वो इसके ऊपर प्लॉट हुआ है, दिस मीन्स कि हमारा सिग्नल बिल्कुल ठीक तरीके से डीमोड्यूलेट भी हो गया। अब फॉर द फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल हम क्या करेंगे कि हम उसी तरह इसको सब प्लॉट फिगर सब प्लॉट 2,2,1 एंड हमारा जो सिग्नल है इसको मैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मैटलैब का फंक्शन है FFT, इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं मैटलैब की, इट इज फॉर द फुल ट्रांसफॉर्म S, L1। और यहाँ पर जो L1 था ये हमने शुरू में यहाँ पर यूज किया था। सो ये बेसिकली क्या है, ये इसकी जो मेरा टाइम वेक्टर था उसको मैंने उसका साइज L में स्टोर किया, और फिर उस L की जो मेरे पास डायमेंशन थी यानी रो और जो मैट्रिक्स है बेसिकली, उसको मैंने L1 में शो कर दिया। तो और फिर उसको मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में अपने पुट कर दिया, क्योंकि FFT के उसमें आर्ग्यूमेंट में वो ये मांगता है हमसे। फिर इसके बाद है P2 टू। और इसी को मैं कॉपी करके ये FFT के बारे में आप जब डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे और उसके आर्गुमेंट्स वगैरह क्या यूज होते हैं और किस तरह उसको आर्गुमेंट्स यूज होते हैं, तो यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट FFT। फिर है 0,2,2,2। अब ये हमने पहले ओरिजिनल सिग्नल किया था, हम कैरियर सिग्नल को करेंगे, साथ में L1 आ गया, P2 के साथ C लगा देते हैं, P1 के साथ भी C लगा देते हैं,
Then we have ABS and capital C. This should be small c. This should be capital C. S को मैं बस C से रिप्लेस करी. एंड देन इसी तरह ही हमारे पास जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें भी यहाँ पर कैपिटल Z आ जाएगा, यहाँ पर Z आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल Z आ जाएगा. That's it. और 2 एंड इस Z वाले से पहले हमारे पास सब प्लॉट में YM के लिए भी आएगा. जो मेरा मॉड्यूलेटेड था, ये मैंने पहले डीमॉड्यूलेटेड को प्लॉट कर दिया था. वो आएगा 2 3. C की जगह आ जाएगा वो YM. यहाँ पे आएगा स्मॉल YM, कैपिटल YM और YY कर देते हैं. इधर भी Y. अब रन करते हैं. ओके, सो ये टाइम डोमेन वाला तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आ गया. जिस तरह हमसे लैब में उसने मांगा हुआ था बिल्कुल वैसे उसी तरह से हमारा टाइम डोमेन में मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट हो गया. इन फ्रिक्वेंसी डोमेन में भी हम देख लेते हैं कि क्या वही चीज़ है. तो सीम्स लाइक कि वही है. इसको जूम करके देखते हैं. हाँ, तो ये मेरा है 300 का और 600 का. बिल्कुल ठीक है, फ्रिक्वेंसी डोमेन में हमारा सिग्नल आ गया. फिर इसके बाद हमने क्या किया, अपना एक कैरियर सिग्नल जनरेट किया था. ये हमारा कैरियर सिग्नल आ गया. फिर इसके बाद मैंने इसको मॉड्यूलेट किया. अगर मेरे पास यहाँ पर मैं इसको विद कैरियर भेजती तो विद कैरियर क्या होता कि मेरे पास जो है वो इन दोनों जो मेरी अपर बैंड और लोअर बैंड थी उनके दरमियान में ये सिग्नल आता. लेकिन ऐसा नहीं था. और फिर उसके बाद ये हमारे पास आ गया. तो ये हमारी जो है वो लैब थी. एंड बस यहाँ ये जो है इसका कोड. थैंक यू.